हेलो डियर फ्रेंड्स, संडे एकेडमी आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। आज आम देखा तरुण गोयल और लुसेंट जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस क्लास 6 आउटा हूँ पूरा 3टे जाक बही जोटा कि आप जनरल नॉलेज लुसेंट आपणकर तरुण गोयल आउ जनरल साइंस सब जाकर पूरा गोटे बहीर सब जाक बहीर संपूर्ण सारांश आ परीक्षा ये अभिज्ञ प्रश्न पढ़ुची पढ़ो यहाँ मुझे डांसर कौच कहीं सब आम पूरा प्रिवियस एक्सपीरियंस आम सब जानूँ क्वेश्चन केमती पड़े कौन नहीं। ओके आउ आपको ये सब जिते सब परीक्षा आगू दौरान ओपीएससी एस हो ओएसएससी सीजीएल मेन्स हो ओ ट्रिपल एसएससी जो आपंकर आरआई आसीगला तार मेन्स हो टीचिंग जिते सब एलटीआर बीईडी एग्जाम हो एसएससी सीजीएल सीएसएसएल हो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एनी एग्जाम पे आपको हेल्पफुल हम यहाँ आप मानिक चलतु। ओके चलो स्टार्ट करिया। आज हम देखा क्वेश्चन क्वेश्चन यार कार केमिस्ट्री देखा कौन मोस्ट hazardous metal pollutant of the automobile exhausted is which is lead. Metal are generally the good conductor of heat and electricity. Acid used in a car battery is sulfuric acid H2SO4. The only metal that is liquid at normal temperature is mercury जोड़ा कि G. Zinc sulfide ZnS is used as a rodenticide. Okay, a reagent which can dissolve gold and platinum is aqua regia. Eta ports to the podichella. The seventh most abundant metal in the earth crust is potassium. The most abundant metal in the earth crust is aluminium. The most abundant known metal in the earth crust is oxygen. A known metal that is dark reddish brown liquid with a burning pungent odor is bromine. The first metal used by man on earth was copper. Copper, silver, graphite are few examples of a good conductor of electricity. Okay, a mixture of nitric acid HNO3 and hydrochloric acid HCl in the ratio of 1:3 known as aqua regia. The most reactive metal among the magnesium, gold, sodium and iron is sodium. Okay, gold, platinum, silver, copper are least reactive metals. Nickel, cobalt, copper are transition metals. Metal ion used in the very green processes is zinc or copper. Among iron, magnesium, mercury, chromium, the element that has the highest electrical resistivity at 20 degrees Celsius is magnesium. Duralumin is an alloy made up of aluminum and copper, a silvery white metal that is used to make gyroscopes, springs, electrical contact, spot welding, electrodes, and non-sparking equipment is beryllium. Okay. ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଣ୍ଡେ ଏକାଡେମୀ ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଡିଏଫ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାसेସ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କୁଇଜେସ୍ର ଆପଣମାନେ ଫେସିଲିଟି ପାଇପାରିବେ। ସ୍ମାର୍ଟ ଓଏସ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଡିସ୍କସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ। ଆଶା OPSC 2025 फाउंडेशन बैच हम पाखे आवेलेबल अच्छी बहुत भल भल फैकल्टी अच्छा आपने आडमिशन इनक्वारी करेंगे से बड़े खुशी ए मक टेस्ट एंड डिस्कसन बैच हम पाखे आवेलेबल अच्छी यार प्राइस 399 आवेलेबल अच्छी आडमिशन इनक्वारी करेंगे। जदि आप बिगनर अच्छा आप चाहते गोटे डायरेक्शन जे ओपीएससी ओएसएससी ओटीपीएससी एसएससी रेलवे जहाँ वैकेंसी बात गोटे मुझे बुझाई चाहिए निश्चित भाव आप फाउंडेशन बैच जॉइन करूँ एथेर आपनक मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके आपन पढ़ा हबो प्राइस रोचे आपनक 39 आपनक 999 आ जदि लाइब्रेरियन करबा पे चाहछन आपनक प्राइस होची 499 बहुत भल फैकल्टी अछन आप निश्चित कांटेक्ट कर जानि परिबे। ओके चलो तो silicon germanium and arsenic are some example of semi metal. The metal which is the best conductor of heat and electricity which is silver. Germanium, polonium, tellurium are the example of metalloids. The element which is mostly used in the making solar cell is silicon. এটা बहुत सब परीक्षा पड़े। Boron, germanium, silicon, antimony, arsenic, tellurium and polonium are examples of metalloids. Silicon dropped with the gallium forms p-type semiconductor. Applying grease
paint and zinc coating on iron prevents it from rusting. एटा भी बहुत पड़ी. The process of plating a thin layer of metal on other metal is called electroplating. Solder is an alloy made up of tin and lead, nickel, iron, cobalt, and some examples of magnetic material. तापर क्वेश्चन आसिला the alloy formed from the combination of gold and silver is electrum. Carbon that exists in different forms is a non-metal. Mercury is always a component in an amalgam. Oxide of sulfur and nitrogen dissolve in rainwater and forms acid which lead to acid rain. এটা বহুত পরীক্ষা পড়ছে. The alloy formed by the combination of copper zinc is Dutch metal. Metals react with acid and produce metal salt hydrogen gas. Non-metal react with hydrogen to produce non-metallic oxide which are acidic in nature. The property of metal to be beaten into thin sheet is called malleability. Liquids that can dissolve noble metals such as gold and platinum is aqua regia. It both are pড়ୁଛି. The most reactive metal is potassium. Okay. The ionization enthalpy of metal is low. The property of metals due to which thin wires can be made by stretching them is called ductility. Boron, silicon, antimony, germanium, arsenic, and tellurium are examples of metalloids. Potassium and sodium react violently with cold water. Mineral that has kieserite as its ore which is magnesium. The alloy formed by the combination of tin and lead is solder. The metal used in LED semiconductor device is gallium. एटा बहुत पड़ची. Metal that react with moist CO2, एटा CO2 in air and gains a green coat is copper. The only metal that is antibacterial is copper. Constant is an alloy of copper and nickel. એટલે મને ये हला पार्ट 1 केमिस्ट्री रो आउ या पे बहुत क्वेश्चन अछि मु नेक्स्ट भी आनिबी काइना मेटल नॉन मेटल चैप्टर टे पढुची परीक्षा रे बहुत क्वेश्चन पढुची त एटा मु आगु को भी आनिबी सीरी चलिबो काना बहुत प्रकार जिंस अछि आपो आपण गोटे क्लास सारि परिबेनी आ मैं भी गोटे क्लास तकार पढी पारे तणु बहुत जहा जहा क्वेश्चन पढुची परीक्षा रे सही क्वेश्चन आनुची जोटा कि आपण करो आपण देखिबे निश्चित भाबे परीक्षा पढिबो. ओके. तेणु ଆପଣ ତ ଜାଣିଲେ ସନ୍ନି ଏକାଡେମୀ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠି ସ୍କାନ୍ କରିବେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗିଫ୍ଟସ୍ ପାଇବେ. ସେମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ଓଏସ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି. ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ. ଆଶା OPCS ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଆପଣ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ. ସେମିତି ଖୁସି ଏସ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ. ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବିଗ୍ନର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ନମ୍ବର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ. ଆପଣ ଯିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କି ସାର୍ ଥିବେ ବୁଝେଇ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ନିଟ୍ ଅଛି. आपण मानको बहुत बढ़िया प्राइस रही 999. आउ जदि आप लाइब्रेरी चाहते भुवनेश्वर 499 बहुत सुइटेबल कॉस्ट रे अवेलेबल अछि. पिला माने आज वीडियो केन लागला निश्चित भाबे आपण मन लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे. टेलीग्राम गोटे चैनल बहुत जिंस पाई परिवे. तेणु वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु. थैंक यू सो मच.